आप क्या चूज करोगे अगर आपका IBPS PO SBI PO में होता है देन? मैं RRB चुनूंगा क्योंकि RRB मतलब वो मैंने बैकअप प्लान के लिए चुना हुआ है ओके बिकॉज मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, ओके मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट भी जरूरत है। What is that loan is called? व्हीकल नो What is the security to the bank? May I come in, sir? Please come, please come. Take your seat. Good morning, sir. Best Good morning, morning, sir. best Good morning. morning. Good. What is the secret of your smile, yeah? Sir, I've always been a happy person. Very good, very good, very good. Yes, sir. Good. Yes. Tell me something about you. So my name is Saurabh Mishra. I was born in Balia, Uttar Pradesh, and when I was 3 years old, we shifted to Delhi, and I pursued Maths Honours BSc from Dayal Singh College, Delhi University, and then I prepared for MSc, but I could not clear that exam, and then I've been preparing for banking since. How about your father, mother, student? My father drives an e-rickshaw, and my mother is a housewife. Very good, very good. Student, sister, brother? Yes, sir. You have been blessed with sisters, brother? Yes, sir. I have 2 brothers. Both are elder. And What they are doing? so one is in Cognizant, that is a company in Gurgaon, and one is in Nandini Infosys, that is also a company in Gurgaon. Very good, very good. What made you to apply for this RRB? Sir, RRB, so that is the only government job, not the only government job, but in banking, RRB is the only bank that gives the opportunity to become an officer and still be confined to just one state. So I can be close to my family while still being an officer. Because in IBPS or SBI, they can send me anywhere across the country. So that's a problem. हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? मैं जब फ्री होता हूँ तो मेरे को 3D पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है. सो फॉर एग्जांपल रूबिक्स क्यूब, ओके आपने सुना होगा. और दूसरा मैं मूवीज देखता हूँ अपने फ्री टाइम में. रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी? मैंने रिसेंटली 3 इडियट्स देखी थी. 3 इडियट्स हाँ जी. लास्ट. हाँ. ओके, तो क्या Only you have seen or along with somebody you have seen? No, I was watching on my phone. ओके ओके Oh, only. Or with your best friend you are watching? No, sir. I was watching with myself on my phone. So you are not having best friend? No, sir. I have a best friend. His name is Rahul Prakash. Huh? Yes, sir. But I have seen you on 14th of February along with your best friend. No, sir. No, sir. I do not have a girlfriend, sir. If that's what I have not said girlfriend. Oh, Yeah. sorry, sir. I You said can go with your best friend also, man. Of course I can go, but I was not in the theater. Okay. I mean, yeah. Okay, great. So in 2020 you have completed your graduation. Yes, ma'am. Okay, great. कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो वैसे? मैं जनवरी से प्रिपेयर कर रहा हूँ 2022 से. Okay, very good. And IBPS PO SBI PO के भी फॉर्म आपने फिल किए होंगे? Yes, फिल तो किए हैं. Okay. But then आप क्या चूज करोगे अगर आपका IBPS PO SBI PO में होता है then? मैं RRB चुनूंगा क्योंकि RRB. मतलब वो मैंने बैकअप प्लान के लिए चुना हुआ है. Okay. बिकॉज मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है. Okay. मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट भी जरूरत है. तो अगर मतलब हो जाता है और RRB नहीं होता है तब मेरे को लेना ही पड़ेगा Okay. वो जॉब. लेकिन फिर भी मैं प्रिपेयर करता रहूंगा. फिर नेक्स्ट ईयर RRB का दे देंगे. Okay. Okay. Great. आपकी वीकनेस क्या है? कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ. Okay. कभी मतलब होता क्या है कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है Yeah. कुछ सिचुएशंस में. तो मेरे को कुछ सजेशंस आए हैं कि आपको थोड़ा सा लिसन भी करना चाहिए. So how will you manage अगर आपको ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है देन बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कामली हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जो आपको आपके फेवर में नहीं होती हैं. देन आपका ये बिहेवियर कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है सिचुएशन को. हाँ, तो वो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ ऑब्वियसली. एंड व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. Okay. And Honest person. So how can you define this point? in terms of if somebody is doing something bad, Okay. and so I won't care if my critical analysis of what his job Yeah.
is going to offend him or not. Okay. So I will be honest that yes, you have done this wrong, and but I will say it in a sophisticated way so he does not get so much offended. Okay. And अगर आप जैसे कि अभी ड्यूरिंग 5 इयर्स आरआरबी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ड्यूरिंग 5 इयर्स आप क्या सोचते हो, क्या डेवलपमेंट आप अपने एंड से कर सकते हो रूरल एरिया में? जैसे आप किसी भी ब्रांच में जाते हो या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको लगता है क्या चीज़ें आप अपने एंड से कर सकते हो? बिकॉज यूथ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज कि आप ही पर सारी चीज़ें, भाई यूथ पर ही पूरी इंडिया है इस टाइम, तो आप क्या ऐसे डेवलपमेंट सोच सकते हो या कर सकते हो? मतलब मैं डेफिनेटली देखूंगा कि जैसे वहाँ पे जिस एरिया में हूँ मैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो वहाँ पे जैसे अगर कोई लाइक मेरे दिमाग में मतलब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मैंने सोचा था। ओके। तो अगर जैसे बहुत ही जो टॉप 100 या फिर वहाँ के जिनके 90% से ज़्यादा हैं मार्क्स, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली लोन ही होगा वो। ओके। तो उसके हिसाब से मतलब मैंने सोचा था, अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है ज़्यादा। ओके वेरी गुड। ओके एंड आप बताइए, यूपी से बिलोंग करते हैं ना? Yes, तो बलिया से आप बिलोंग करते हैं, तो बलिया के बारे में कोई खास चीज़ जो आप बोलना चाहेंगे? So Balia was the first independent city of India. Okay. And जो हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे, चंद्रशेखर सिंह, वो भी बलिया से ही थे। Okay, very good. एंड एक और चीज़ है, बता सकता हूँ? बोलिए। तो जेपी नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, वो भी बलिया से ही थे। Okay, very good. और आरआरबी के बारे में बताइए। अभी यूपी में 4 आरआरबी को मर्ज करके एक न्यू आरआरबी बनी है, तो उसका नाम आपको पता है? मतलब मेरे को ऐसी न्यूज़ तो नहीं सुनी है वैसे, मतलब शायद ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, मतलब क्योंकि 4 आरआरबी तो है नहीं। नो एक्चुअली मर्ज हुआ है। मतलब आरआरबी तो 3 ही है ना, एक प्रथम बैंक और एक मतलब आर्यव्रत बैंक और एक बड़ौदा यूपी बैंक, तो चौथा कौन? एक मर्जर हुआ है जो बैंक है, काफी पॉपुलर है इस टाइम। मतलब मेरे को लग रहा है कि मतलब चौथा बैंक तो नहीं, तो ओके। डू यू नो अबाउट सर्व ग्रामीण बैंक? सर्व ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। नो मैम, आई डोंट नो। ओके, इट्स ओके। हाउ इट वाज फॉर्म्ड? नो आइडिया। नो। ओके। Which ग्रामीण बैंक you know? You tell any one name. आर्यव्रत बैंक। Okay. It was controlled by which bank? NABARD. Some bank has been sponsored. Sponsored banks. Who is that? So I don't know much. Good. What is the contribution by central government to this RRBs? How much percent? I know the question. I understand the question. 60%. Let me think, sir. 15, 35. 50%. State government. Yes, sir, 50%. State government. State government is 15%. Okay. Central government? 50%. So 50, 15, 35. Yes. All over the India, कितनी RRBs हैं? 56. I'm not sure about that. Okay. Committee? Do you remember the committee who recommended RRBs? Yeah. नहीं, मेरे को नहीं पता। Okay. अच्छा, आपने बैंकिंग का फील्ड ही क्यों चूज किया? Why you are not choosing like SSC and railways? मतलब मेरे को एक्चुअली जैसे मैंने 2-3 चीजें सोची थी कि SSC, बैंकिंग और UPSC, बट मैंने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल की पैटर्न इसका बहुत ही फेमिलियर है मेरे साथ। तो मैथ्स है, इंग्लिश है और रीजनिंग भी वो बाद में देखेंगे, बट मैथ्स और इंग्लिश पे मेरा थोड़ा सा होल्ड है। और दूसरा कि उसकी वजह से यूपीएससी एलिमिनेट हो गया, और बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है मेरी फैमिली की, तो मुझे एक जॉब थोड़ी सी जल्दी चाहिए, तो फिर मैंने आरआरबी चुना। मतलब तो सपोज अगर आपको आरआरबी पीओ में आपकी जॉब लग जाती है और आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है, आपको कोई एक पर्सन आता है जो काफ़ी एग्रेसिव टाइप का होता है, ठीक है, आप उनको क्रेडिट कार्ड इशू कराना है बट स्टिल नहीं हो पाया, कुछ रीज़न रहे बैंक के, ठीक है, बट वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपके किसी एम्प्लॉय के साथ बैक टू बैक मिसबिहेव कर दिया है और उस समय सिचुएशन आपको ही संभालनी है, तो आप उस सिचुएशन में क्या मूव रखोगे? मैम सबसे पहले तो मैं उस बंदे को वार्निंग दूंगा, और अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो मैं फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूंगा कि इसको ले जाओ बाहर। ओके। और अंदर में 4 आदमी आया,
What you will सिक्योरिटी do? सिक्योरिटी गार्ड को तो बुलाऊंगा ही मैं। Yours is a small branch. RRB is a small branch. Your total staff is 5 people. sometimes there is only 2 to 3 people only Okay, in okay, okay. village area. 4 people have been. So I'll definitely try to, calmly express what my problems were, obviously. Okay. But if the situation cannot be controlled anymore and if things become violent, then I'll definitely call the police. Okay. But I'll first try to calmly express what my situation was, Okay. why I couldn't solve this problem. प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप कुछ बोलना चाहोगे कि क्या इसके हित में है चीजें, कितना आपकी कंट्री की और कितना हित में है? प्राइवेटाइजेशन जैसे प्रोज तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे थोड़ी बहुत जैसे एफिशिएंसी बेटर होगी कुछ Okay. बैंक्स की, और जैसे लोन्स वगैरह हैं या फिर कोई जैसे बैंक मतलब बिल्कुल ही एनपीएस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो थोड़े से किसी एक अच्छे गवर्नमेंट बैंक के साथ मर्ज करके वो बेटर हो सकते हैं। Okay. और कौन सी हैं कि मतलब जैसे कोई ऑफिसर्स वगैरह हैं उनकी लाइक जॉब स्टेबिलिटी थोड़ी सी जा सकती है। Okay. और यही डिमांड। डीमैट अकाउंट के बारे में जानते हैं आप? डीमैट अकाउंट, इस अकाउंट से मतलब हम सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अकाउंट होना चाहिए। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या होती है? नहीं पता Okay. NEFT maximum? किसकी सर? NEFT? नो सर, आई डोंट नो। Okay. किसान क्रेडिट कार्ड का तो नाम सुना ही होगा सुना आपने, है। है ना? तो इसके बारे में आपको क्या पता है? हम ज़्यादा कुछ नहीं पता। ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। पता, सुना है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसा कि रूरल एरिया में आप सर्वाइव करोगे, अगर आपका आरआरबी में हो जाएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं अरेंज? अरेंज मैरिज मतलब ओके। ठीक है, बाकी लव मैरिज भी मतलब ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है। सो डजंट मैटर, कोई So भी already मैच। he is having best friend. Actually, the main reason is sometimes if you like any girl, आपको कोई लड़की पसंद है, ठीक है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है किसी केस में, बिकॉज आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ओके, तो आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो लोग एबल नहीं है उतना स्पेंड करने के कि आपकी अच्छी मैरिज कर पाए, बट इसी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कोई किसी रीजन से, तो आप क्या स्टेप लोगे? और आप उस लड़की से बहुत ज्यादा मतलब अटैच्ड हो, आपको लगता है कि करनी चाहिए, मतलब किस रीजन से कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर हाँ, मतलब the कि main love reason marriage is के लिए नहीं मान रहे? sometimes in our society, you know that if anyone having government job, मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली वी ऑल नो दैट कि मतलब वो these things कंजर्वेटिव हैं इस चीज हाँ। को लेके कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते, या No, फिर no, वो no. इस चीज के लिए कि वो दहेज मांग रहे हैं, ऐसा कुछ है? like that कि हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब में है और जो लड़की तुमने पसंद करी वो तुम्हारे कंपैटिबल नहीं है, बट तुम्हें पसंद है, मतलब अच्छा, आपको अच्छा। पसंद है बट वो कंपैटिबल नहीं है दोनों फेज में, कि एक तो आपके लिए नहीं सही, दूसरा वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, या डाउरी इन द सेंस कि वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते। वी कांट से डाउरी बिकॉज एवरीवन डोंट वांट लाइक एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। यस। So- तो मतलब मैं तो पहले अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं समझता हूँ ऐसा कि वो लड़की मेरे लिए कंपैटिबल है, Okay. और लाइक उसकी ऑब्वियसली अब वो मेरे को पसंद है तो उसमें उसकी वो फाइनेंशियली स्टेबल ही होगी डेफिनेटली, और भी चीज़ें उसकी खूबियाँ उसकी क्वालिटीज़ मैं बताऊंगा अपने पेरेंट्स को, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो समझ जाएंगे, अच्छा, वो ओके समझ जाएंगे। ओके ओके गुड। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, जैसे कि डिजिटल करेंसी है, ओके। और इसका लाइक कोई कुछ इंडिया में कुछ सुना हो आपने इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया में? क्रिप्टो करेंसी को लाइक लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। ओके। What do you mean by NRE? क्या था? MRA MRA NRA NRA National रिक्रूट agency, National Recruitment Agency, and NRA is non-resident country. You are correct. National Yeah. Recruitment Agency. Is it good for the people? NRA From Kanyakumari to Kashmir, the government of India thought it had to have this agency to recruit for staff selection commission, insurance and banking, railways. Is it good? I mean, so I don't have enough information on this. Okay. So. What do you feel? Now IBPSs have been shutting down. Earlier it is a BSRB.
Now it is IBPS. In future it is a NRA, National Recruitment Agency. Now the government says only one examination for all the people. Is it good? No, sir. I would disagree with the government because if there is just one exam, then we don't have people with specializations. So, for example, I can just apply for banking right now by IBPS, and I have that specialization that IBPS wants, and it is only for banking sector. And but in the selection process of, But at the same time, the people has to appear for so many examinations. that's It is a a good, disadvantage to the candidate. that can be a good thing, but we have to think about the industry. So do you mean the government has not thought anything? No, sir, they have obviously thought something about it, but I'm just disagreeing. ओके रिसेंटली अभी आपने यूक्रेन के बारे में सुना है कि अभी वॉर जो चल रहा था तो उससे पूरी इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ा है वर्ल्ड की, तो इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आपकी नेबर कंट्रीज जो हैं उन पर? हमारे मतलब साउथ एशियन कंट्रीज में स्पेशली इंडिया, स्पेशली ऑन इकोनॉमी, स्पेशली मतलब हमारे यहाँ पे तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ गई है बिकॉज रशिया और यूक्रेन, रशिया जो है एक मतलब एक्सपोर्टिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है. ओके तो उसमें क्या हुआ है कि मतलब यूएसए और वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से हम जो है खरीद नहीं सकते हैं डॉलर्स देकर पेट्रोल. तो हमें अब मतलब इसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि अब मतलब मार्केट सप्लाई जो है वो कम हो गई है ऑयल की. और हमारे नेबर कंट्रीज में से किसको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है इससे? एनी आइडिया? लाइक चाइना को थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है. थोड़ा बहुत, काफी हुआ है. आपने कहीं जॉब करी हुई है इससे पहले? नहीं, मैंने जॉब नहीं करी है. ठीक है. मतलब अगर हाँ जी. नहीं, जैसे मतलब क्योंकि मैंने 2020 में मतलब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद मैंने मतलब वो किया था, क्या बोलते हैं, एमएससी जैम के लिए अप्लाई किया था. ओके. तो मतलब उसमें मैंने दिया था टाइम, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया था. उसके बाद से मैंने बैंकिंग स्टार्ट किया. मुद्रा योजना के बारे में आपने सुना है? मुद्रा योजना, आई थिंक इसमें क्या होता है कि लाइक गवर्नमेंट जो है वो लोन्स देती है. Mudra loan, which bank is giving? Who is the controller? आई डोंट नो. What is the expansion of SIDBI? SIDBI, Small Industries Development Bank of India. That is the person who is taking care of the Mudra loan. Okay, sir. नाबार्ड का फुल फॉर्म? National Agriculture. Let me think about it. National Bank for Agriculture and Rural Development. What it is doing? So it is providing like loans and credit to agriculture sectors for the. So I am having 10 acres. I'll get loan from NABARD. What do you have, sir? I am the holder of 10 acres or 5 acres. I am having the lands, agricultural land. May I get a loan from NABARD? Obviously, sir, they'll look about some conditions. I mean, they'll have some conditions. I don't know about that. रिसेंटली आपको कुछ ऐसा याद हो जो नाबार्ड की तरफ से आरआरबी के लिए किया गया हो, कोई लोन सेक्शन हुआ हो या फिर कुछ ऐसा? नो मैम. कोई डेवलपमेंट आरआरबी के लिए जो आपको याद हो, करंट में चल रहा हो? एनी? नो मैम. Okay. What is RBI functions? So RBI is a regulator of all banks in India. It is a banker's bank. It is a government bank. Yes. Other than that one, it is a note issue. Yeah. Yes, sir. Then other than that one. So RBI is to. How RBI is getting money, and to whom RBI is lending money? So main function, first of all, main function of the RBI is to control inflation, and one other. How RBI is getting money? What is the source of funds to the RBI? Sir, the deposits of the banks and the rate it gets interest on those deposits. That is the source of income. So okay, what for RBI lending money? RBI is lending money to banks. Banks. Yes, all kinds of banks. Okay. Now we want to construct an infrastructure. Who will lend money? Who will fund it? The government want to make a metro gauge or a metro train.
Who will fund it? Sir, The government want to create. So I understand the question, sir. I don't think I can answer that. Okay. What do you mean by budget? Budget. So the government Will prepare a budget will prepare of a income and expenditure. Yes, sir. Is called a budget. Do you know the article under Yes. which budget किस article के अंदर? No, ma'am. नहीं है. Okay. It's okay. Article 370. Do you know that? Yes, sir. Yes, ma'am. I know about that. Article 370 is the it relates to what- Jammu and Kashmir, Yeah. and it gives some special powers to the Jammu and Kashmir Okay. for some special, so that it can have a different constitution, not exactly different, but more autonomy Okay. than other states. अच्छा, ऐसी कौन सी बैंक है जिससे कस्टमर मतलब नॉर्मल पीपल जाकर डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते हैं? SIDBI, RBI, And NABARD, और NHB. रिजर्व रेपो रेट के बारे में आप जानते हैं? Reserve repo rate, रिवर्स. reverse repo rate. What do you mean by reverse repo rate? Reverse repo rate is The the rate at which the RBI, I'll tell you, sir. So Actually, RBI, important. at which RBI, when deposits of banks are in RBI, and RBI RBI pay Pay interest. RBI interest. Yeah. Is reverse. RBI You receive can interest. relate both repo rate and reverse Reverse. repo rate, so you will not confuse. that is the confusion. Repo Yeah, rate and yeah, reverse actually. repo rate. That's what. So we have to say. connect both points, Yes, so ma'am. it will not create any confusion. Then only we can eliminate the people. Yeah. We cannot extend all the people to be. Do you know appointed. the types of account? Yes, ma'am. Yeah. There are 4 types of accounts: Okay. current account, savings account, recurring deposit? Recurring fixed deposit and- What is the difference between current and saving? current savings. Current account does not give any interest, Okay. or savings account does give, and there are no very minimum restrictions on number of transactions and the amount of transaction in Okay. the current account. On the other hand, there are too much restrictions. चेक और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? ये नहीं कहूँगा। Okay. Check or draft are governed by which act? No, sir, I don't know. What do you mean by NI Act? Negotiable Instrument Act. Yeah. What act, sir? Negotiable. Negotiable Instrument Act represent which instruments? Debt instruments? I'm not sure about that. What is the validity period of a check? I don't know. Draft. I don't know that. आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है, right? So how can you use all these things in your job? मतलब मैंने मैथ्स ऑनर्स मतलब मेरी Maths. स्पेशलाइजेशन मैथ्स है, तो Okay. मैथ्स में हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स से हम मतलब जूझते हैं, कह Okay. सकते हैं. Do you know श्रीधराचार्य rule? श्रीधराचार्य rule. No, but I think maybe it is a quadratic formula, but I'm not sure about that. Okay, what is like a plus b का whole square? A square plus B square plus 2AB. Okay. That is the Sridharacharya rule. No. All right. Pythagoras. Yeah, actually. What is like a cube minus b cube? A cube minus B cube. There is no formula for that, but Yeah, there's formula. I'll have to A minus B cube is equal to A cube minus B cube plus 3AB. Then I'll have to Okay. There's take some it there. take. Okay, no issue. Just asking because you are saying like you are from Okay. maths No problem. background. Yeah. So good. अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कि आप देख रहे हो आजकल दिल्ली में भी देखा जाए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, इवन अब सारी सिटीज में बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए कारण है और क्या ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा तो एक ट्रांसपोर्ट का जो पोल्यूशन है Okay. और फैक्ट्रीज का जो पोल्यूशन है, और एक तो ये सब है.
इसकी वजह से मतलब ये सारा पोल्यूशन हो रहा है। Okay. और मतलब हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मतलब इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कनॉट प्लेस में एक वो बनाया था स्मोक टावर। Okay. और लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करो। मतलब किसी स्कीम के हिसाब से फॉर एग्जांपल दिल्ली में किया है कि वुमेन को फ्री कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक और इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आई थिंक वो कितना गुड है आपके हिसाब से? वो बहुत अच्छा क्या? मतलब वो है, क्या बोलते हैं। तो अभी दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं वैसे? हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आप जाते हैं Okay. तो वो आपको कुछ ना कुछ कंसेशन देते हैं कि हाँ आपको 10,000 20,000 मिल सकता है। क्योंकि मेरे पापा एक्चुअली ई रिक्शा चलाते हैं तो मतलब उन्होंने जब खरीदा था तो उनको आई थिंक 1,05,000 का वो पड़ा था। Okay. और उसमें मतलब डिस्काउंट आई थिंक 15 to 20,000 का पड़ा था। Okay. Your mother is housewife? यस मैम। Okay. Sir? Yes, Mr. Mishra. यस सर। I want to transfer funds from India to abroad. Yes. What is the payment gateway available? स्विफ्ट। Very good, very good. How much amount I can spend? How much amount I can send through SWIFT per annum? आई डोंट नो अबाउट दैट। There is a limitation per calendar year. Very good, very good. No issue. Okay. See, I want gold loan. What is that loan is called? What is that? Loan is called. What Yes. is the loan is called? I want to avail loan against gold. What is that loan is called? Gold loan. Maybe I think gold loan. I don't know about that. Okay. This is I want to avail loan against silver. Hmm. What is that loan is called? Silver loan. Maybe silver loan. What is the loan called? Pledge. What's that? Pledge. 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 No sir, I don't know. Okay. Availing loan against valuables is a pledge, whether it is a gold or silver or whatever. It is not a gold loan, it is not a silver loan. Okay. Just for the sake of the customer, we will say it is a gold loan. Mhm. But in banking terminology, this is called Pledge. pledge. Okay. You availed a vehicle loan. You availed a vehicle loan. Vehicle will be with you. Okay. As well as the RC book also with you. What is the security to the bank? In gold loan pledge, the gold will be with the bank. To the bank. Ownership will be with the borrower. But in vehicle loan, what is the security to the bank? You are purchasing a vehicle Maybe here. the RC. RC book is with you. It is not with the bank. You are purchasing a vehicle. What purpose? For transportation. To So whom you want to transfer? no sir, for transportation myself. Only yourself. There are 2 seats. That's my best friend. Good. What is that loan is called? Vehicle loan. No sir. What is the security to the bank? I think Hypothecation loan. hypothecation. See, there is a class in the RC book hypothecated to State Bank of India, hypothecated to Indian Overseas Bank. That is the security the bank is having. Good. What do you mean by mortgage loan? So it's loan for if I have to if I want some amount from the bank, so I'll mortgage my house. So they'll have it as a security. I'll give it to the bank and still live in it and get some amount from the bank. Yes, Mr. How is your interview? It was good, sir. Where you are lacking or you are comfortable? So I think all over good. Okay. Good. I could have done better in definitely GA. Good. You are in. Yeah, actually, you have to focus on some parts like when we are asking some questions regarding KCC, because these are the main points for RRB, that total number of RRBs, RRB committee, reverse repo rate, because these are the common things. They will definitely ask about RBI if they are asking from they will ask from RBI and banking field. So you have to prepare for this also. Okay, and overall is good. Your body language is really very good, because sometimes we don't have knowledge like for some point or some topic, but if we are doing good with our vocabulary and our way of talking is good, then it will
not a big deal. And overall is very good, but we have to work some points like Definitely. current news, last Mhm. 15 days. Yes. You have to aware with the things. And if anything happened recently with RRB in NABARD, then उसका भी knowledge आप साथ में रख लेना अपना. बाकी overall is really very good. Okay, you can handle the situation in bank. Okay. According to your answer, then you can do like this. Okay, no issue. But sometimes Just to refresh yourself in functions of NABARD. NABARD will extend loans and advances only to the banks, Yeah. Mhm. not to the customers. Yeah. Similarly, Reserve Bank of India, it will extend loans and advances not only to the bank, Bank. but also government projects. Project. Okay. No source of funds to the Reserve Bank of India is tax. Okay. Application of funds is only for the infrastructure, defense, like that. Mhm. It will not extend loans and advances to the parties also. The scheduled and commercial banks will borrow for a short-term loan, not for a long-term loan. That you have to. And RBI types of accounts are two types: Okay. demand deposits and time deposits. Okay. Under demand deposits is savings bank and current account. And that is RDNFA. Okay. And And time deposits is RD account and fixed deposits. And similarly, payment gateways, you are correct. NIFT, RTGS and SWIFT. SWIFT is from India to International. overseas. So there is a limitations. The limitation is per calendar year, not accounting year. From 1st Jan to 31st of December. You can send this much of amount. As of now, it is 2 lakhs. You can send one time or several times. If you want to send more than that one, you have to get a permission. What purpose you are sending actually? From the government. Yeah, from the government. Then regarding the situation, he has said he will call the police. Before that one, you have to inform to your head office what to do, what not to do. Yes. First situation, you have to highlight your head office. In the RRB, there is only a limited staff, small strength. If any untoward incidents, immediately first thing is we have to inform to the head office. This was the thing happened. Then you can go for the statutory authorities, to police or some other persons. Accordingly, you have to. In Act, negotiable instrument, this covers the checks, drafts, banker's check, all the instruments related to banks, which are negotiable. That is called Negotiable Instrument Act. And a mortgage loan is exclusive on fixed assets, land and building. Pledge is movable assets. You can borrow against a vehicle, you can borrow against a cycle, you can borrow against a gold, silver, etc. NRA, it is the government policy. It is government policy. Of course, we will feel, I am good in banking, I am good in insurance, I am good in staff selection commission, civil exam. Okay, these are the different. But the government thought is about NRA. And frequently you are using, I think. Oh, yes. Okay. As far as possible, you limit that one. Okay. Yes. Yeah, limits for RTGS and your ATMs. So Anything. you have to Yes. white label ATMs. You can. You are good candidate and excellent. Yeah. If you tune up a little bit, your body language is good. Your body language is good. Way And, of talking is also good. yes, Everything is good, but you have to work on knowledge. I'll definitely work. Yeah. Yes, your pronunciation and modulation in answering is excellent. Excellent. If you tune up about few things, when is your interview? So, abhi dates nahi aaye hain. So this is the things it will happen. So Have you applied from UP? Yes. good. Anyhow, best of luck for your Thank you, sir. best friend. Yeah, best of luck. All the best for your Definitely, interview and Definitely. definitely. Good. Please wait. Okay.